Hello students, today we are going to study economic order quantity, that is EOQ numerical. How to calculate economic order quantity. First of all, we have the formula for the calculation of economic order quantity, that stands for EOQ. The formula is EOQ is equals to under root 2AO upon C, where A stands for total annual requirement for the item, means एक कंपनी को जितनी भी साल भर में 12 महीने एक साल के अंदर जितना भी टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, दैट स्टैंड्स फॉर ए, दैट इज टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट. ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ दैट आइटम. ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हो गया जितनी मल्टीपल टाइम्स आप किसी भी मटेरियल को खरीदते हो, जितनी बार ऑर्डर प्लेस करते हो, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट. सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. कैरिंग कॉस्ट का मतलब साल भर में जो मटेरियल आप खरीद करके रखते हो, पर एनम मीन्स साल भर, फॉर 12 मंथ्स, फॉर 1 ईयर खरीद करके रखते हो, दैट इज़ योर कैरिंग कॉस्ट. नाउ on the basis of the question given over here in the sheet, we are going to calculate economic order quantity. So the question is find out economic order quantity, that is EOQ, where in the question material bought every month for production is given, order cost is given, carrying cost is given. So first of all we need to write down the formula. We'll write the formula as, we'll write the formula below leaving certain space. We'll write EOQ is equals to under root 2AO upon C. As we have seen over here, the formula was 2AO upon C. Okay. Now from the question we can see A is given in the question. Material bought every month for production. Over here it is mentioned every month. We need to find out material used for annually we have to find out that is total annual written. So it will be 1 lakh units per month into 12, क्योंकि एक महीने का अगर 1 लाख है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दैट इज फॉर दी कंप्लीट ईयर वी नीड टू फाइंड आउट, दैट विल गिव यू 12 लाख रुपीज़. ठीक है, 12 लाख यूनिट्स हो गया. देन ऑर्डर कॉस्ट इज गिवन एज 200 पर ऑर्डर. कैरिंग कॉस्ट इज गिवन एज 10 पैसा पर यूनिट पर मंथ. इट इज़ पर मंथ बट वी नीड टू फाइंड आउट फॉर पर एनम. एनम का मतलब साल भर के लिए. तो अगेन for a year if we need to find out, we need to multiply it by 12. So we'll write C is equals to 0.10 into 12 will be equal to 1.2. Now putting the values of A, O and C into the formula, we'll write under root 2 into 12 lakh, that is the value of A, into 200, that is the value of O, upon C. C की value कितनी है? 1.2. When we are going to calculate this, we are going to get the formula as 220,000 units. We'll get the answer as 20,000 units, which is the answer for this question as EOQ. Right? Okay.